Welcome to MDC Learning, Standard SYBCom, Subject Business Law. Hello learners. Today we will talk about Indian Companies Act 2013 Part 1. Under that, we will focus on doctrine of ultrawire. So let's know about the introduction of doctrine along with the most important case or a landmark case under doctrine of ultrawire along with certain important consequences. Now on your screen you can see the introduction. Let's just understand simply the meaning of doctrine of ultrawire. Doctrine means a theory, something which is defined in deep, and ultrawire means beyond power, something which is done beyond boundaries of someone. अपने अधिकार या अपने लाइन को क्रॉस करके या अगर कोई काम किया गया है तो उसे कहेंगे अल्ट्रावायर. ये जो अल्ट्रावायर का डॉक्ट्रिन है ये बेसिकली फोकस करता है an action which is taken outside memorandum of association. जब कोई कंपनी कोई ऐसा काम करती है जो कि उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी MOA में नहीं लिखा गया होता है, तब हम कह सकते हैं that the work is done is completely ultra wire, that is beyond the power of a company. All the powers of a company is defined under memorandum of association. If company does any kind of act, अगर कंपनी किसी भी तरह का एक्ट करती है, किसी भी तरह का एक्शन लेती है जो कि उसके मेमोरेंडम में नहीं लिखा गया है, तब जब केस बनेगा उसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर कहेंगे. Ultrawire acts are any act which lies beyond the authority of a corporation to perform. Ultrawire acts fall outside the power that are specifically listed in the corporation charter or law. They can also refer to any action that is specifically prohibited by the corporate charter. In legal terms, if we talk in a complete legal terms, it is applicable only to the act performed in excess of the legal powers of the doer. It means कंपनी अपने लीगल पावर यानी कानून द्वारा उसे जो अथॉरिटी दी गई है, जो पावर दिया गया है, उसके अगेंस्ट या उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकती. Focus on the last one. The work on an assumption that the power are limited in a nature. Of course, the power of a company is completely limited. Limited to what? Limited to memorandum of association. Since the doctrine of ultrawire limits the company to the object specified in the memorandum, the company can be below the company can be restrained from doing its funds or restrained from carrying on trade different from unauthorized. See, if a company does any kind of work which is ultrawire, which is beyond its power, then the company can be restrained from doing work. कंपनी को रोका जा सकता है काम करने के लिए, या कंपनी को अपना जो बिजनेस का पर्पस है, जो फंड रेजिंग है, उसको करने से भी रोका जा सकता है. So this was in general meaning of ultrawire and the complete explanation of memorandum of association. ही वो पावर्स हैं जिसके बियॉन्ड कंपनी नहीं जा सकती, और अगर कंपनी ऐसा करती है तो जो केस बनेगा दैट केस विल बी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर का केस. लेट्स गो फर्दर एंड फोकस ऑन द केस. देयर वाज अ इम्पॉर्टेंट केस, एस्बरी रेलवे कैरेज. दैट पर्टिकुलर केस वाज एस्बरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस राइज 1875 case. Students, this case was a highly important case at that time. This case gave an important base जिसकी वजह से डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर जो है हमारा वो एग्जिस्टेंस में आया. इस केस में जो
कंपनी थी वो ऐसा एक्ट या ऐसा काम करने लगी जो कि उसके पावर के अगेंस्ट था, या कहें तो उसके पावर के फ्रेमवर्क में नहीं आता था। सो दैट्स बिकॉज ऑफ दैट जो हमारा कोर्ट था उसने ऑर्डर पास किया एंड डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर केम इनटू एग्जिस्टेंस। कंसिक्वेंसेस अब देखें तो, so now we will focus on the consequences because consequences are the most important thing in our exam. Now on your screen you can see the consequences when a company gets involved in ultra wire transactions. ऐसे कौन से सिचुएशंस हैं एंड उसके कौन से सॉल्यूशंस किए जा सकते हैं when a company gets involved in ultra wire transactions. There are 6 points. First one is injunction, that is command. So who is taking this injunction? Who is taking this command? सी स्टूडेंट्स, जब कंपनी कुछ भी गलत करने लगती है या अपने पावर यानी अपने मेमोरेंडम के अगेंस्ट जाने लगती है तो द मेंबर्स कैन रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क. हु आर द मेंबर्स? मेंबर्स आर द शेयर होल्डर्स, द स्टेक होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी. जो मेंबर्स हैं वो कंपनी को अपने हाथ में ले सकते हैं, उसकी डोर जो है, उसका कमांड जो है उसको अपने हाथ में ले सकते हैं. इसी प्रोसेस को हम कहेंगे इंजंक्शन करना. वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हुआ था, अटॉर्नी जनरल वर्सेस जूनियर ईस्टर्न रेलवे कॉर्पोरेशन. दिस केस टुक प्लेस इन 1880 5 AC 473. अब इस केस में हुआ क्या था कि जो कंपनी थी that was going beyond its own power. So the people who were the stakeholders of a company took the command of a company in their hand. Second one is personal liability of directors. What this personal liability of a director is all about? As we know, the company is different and the people who are working in a company are different. Company have its own legal identity. So do the other people who are working in it. So what happens is that the directors should have their duties to ensure that corporate capital of a company is used for a legitimate purpose only. The corporate capital should not be used for an illegitimate person. That means corporate का यानी कंपनी का जो पैसा है या जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है that should be used for a appropriate purpose, that should be used for a company purpose and for the growth of a company only and not for the purpose of a personal liability या खुद के फायदे के लिए नहीं यूज किया जाना चाहिए. This is also an important point. Third is breach of warranty of authority. This particular point simply implies that there should not be any kind of breach. Breach means उल्लंघन करना. किसी भी वारंटी या फिर किसी भी अथॉरिटी, किसी भी पावर का ब्रीच नहीं होना चाहिए. अगर आपको पावर दी गई है तो यू हैव टू वर्क इन अ सर्टेन कैपेसिटी, आपको गलत नहीं करना है. फोर्थ इज अल्ट्रा वायर अक्वायर्ड प्रॉपर्टी. अगर there is any kind of consequences where the property is acquired ultra wire, गलत तरीके से acquire की गई होगी प्रॉपर्टी, तो ऐसा भी नहीं किया जाना चाहिए. Next one is ultra wire contracts. Any contract if a company cannot enter into any kind of contract which is ultra wire or which is beyond their power, in such a situation this can be a bad for a company and that can give a bad impact of a company in the eye of other people. Ultra wire torts. What is ultra wire torts? First we have to understand what is tort. As we know, ultra wire means beyond power. Tort means something which is not wrong. Tort means ऐसी कोई भी चीज जो गलत नहीं which is completely wrong. टॉर्ट में कोई एक्ट्स नहीं है, कोई सेक्शंस नहीं है. दिस इज एन एक्ट विच इज डन ऑन द बेसिस ऑफ अ सिचुएशन. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. मान लीजिए आपका एक घर है जिसके बाहर एक स्विमिंग पूल है. 4-5 लोग आते हैं स्विमिंग पूल में, दे आर टेकिंग बाथ, दे आर क्लीनिंग देयर क्लोथ्स ओवर देयर और फिर चले जाते हैं. उन्होंने आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं चुराई है.
there is no criminal activity, there is no civil activity, कोई भी गलत काम उन्होंने नहीं किया है, तो इन सच सिचुएशन कोर्ट में आपका जो केस बनेगा वो लॉ ऑफ टॉर्ट के थ्रू बनेगा. सो कंपनी अल्ट्रावायर को कोई भी काम नहीं कर सकती है. So students, that's it. This was all the consequences. I hope you understood. You have to go with these 6 points and the introductions. Thank you.